we have Mr. Balram Yadav. He is currently Deputy Registrar of Scope Global Skills University. He started his career as an assistant professor in Scope College. His education qualification includes BE in Electronics Engineering and M.Tech in Digital Communication. He is a certified NSDC trainer in Telecom and Electronics SSC, and his achievement includes various guided 35 plus research scholars, authored 20 years, authored 25 plus papers in power electronics, power system, and renewable energy. Welcome, sir, and over to you for the rest of the webinar. Thank you, ma'am. And welcome all the participants to this webinar on renewable energy, certificate course on renewable energy. Today we will cover this session in two parts. One is on the side of the training content, and another one is for the software part of the training, which we will cover in the training programs if you have got selected for the same. Let's start with Lucas Newell. The Lucas Newell is a German-based company. It has more than 45 years of experience in the training in the field of electrical engineering, electronics engineering, automation technology, mechatronics, communication, and automotive technology. They have also a Allen Foundation. It supports institutions like us and projects worldwide with the aim of developing technical industrial education and training. To this end, the foundation awards its own scholarship to selected individuals and supports educational projects financially or through the provision of training systems. Here in our case, the Allen Foundation is supporting us as a training system. The system is provided by the Lucas Newell only. See, Lucas Newell has various categories or various products to impart you in the trainings, futuristic trainings, we can say. They have developed Unit 10 system. We will discuss in the ongoing slides. Commercial vehicle technology, process control, float power, automation or industry 4.0, power electronics, electrical machines, power engineering, smart grids. So the course renewable energy is in the this part, power engineering or smart grid technology system. Renewable energies, which we will cover definitely cover in this webinar. Another one products are process and chemical engineering, communication technology, microcomputer, building management, automotive, hybrid and EV systems, Bocaneto, HVACR, and machinery and system engineering. See, all these trainings will be provided you by the Lucas Newell only in association with Scope Global Skills University. What are the advantages if you select this program? See, Lucas Newell provided you hands-on learning practice. Yeah, learning environment, which will provide by the Lucas Newell only. Customization. Lucas Newell also provides customization. If you have some specific training programs or you have some objective in for the certificate, so we can also customize it as per your requirement, or we can also customize it on the basis of the company or whatever you can say. It also provides real world relevance. Means if you did the training in this particular course, it provides you a real world experience, or you can say if you will have practical knowledge of each and everything related to the renewable energy. It also provides safety because electrical engineering generally provides at a higher voltage and higher currents structure. So the Lucas Newell is also provides you safety in this particular area. Competitive, it also provides you competitive advantage
Graduates or pass outs who have hands-on training experience using Lucas Newley systems may be more attractive to employers because they enter the job market with practical skills and knowledge only. It has also means the Lucas Newell will also provide you global recognition. Lucas Newell is a reputable name in the field of technical and vocational education. So institutions or the individual who are using this particular training system, using their systems may benefit from a recognition of quality in the global education community, right? What makes us different? The unitary system. The how we are different from another training programs. Lucas Newell provides you a unitary system. We will discuss definitely the unitary system. See, these are the some hardcore sections of the unitary system, right? They see this is unitary system for as a whole, like this. The unitary system has some specific kind of things like hardware interface. Then software, the software provided by the Lucas Newell is LabSoft software, which enables you to do a real world training in the area of renewable energy. Then it provides you theoretical explanation. We will discuss how it happens in the Lucas Newell systems. Then after the discussion and each and every explanation from theoretical explanations, they have developed a simulation based on the theory only and modeling. They develop theory, they develop simulations and modeling by the theoretical explanations. For example, if you have solar irradiance comes from the sun, and how it will works with the PV photovoltaic cells, it will simulated and modeled you to by using the simulations and modeling part. Then after the simulation and modeling part, they will explain you how it practically considered or implemented to the real world. If you got completed the practical implementations of the theoretical part, then they will provide you a test and exam through the whole training programs, right? So this particular things will not be covered in any of the training programs which is available in the market. See, okay, so uh, the unitary system, right? How it works. Multimedia, it is a multimedia learning environment with high degrees of motivation, enabling students to acquire skills in the handling of equipments or the trainer part. Maximum learning effectiveness in laboratories and work or at home. It provides instruments with virtual display together with experiment hardware. It is also a part of the unitary system. Software, it is called LabSoft, an open experiment deliver platform. It delivers you everything related to the training. Courses teach the theoretical building blocks and provide experiments related to that. It provides high quality item of laboratory equipment with virtual instruments. Students' progress monitored and electronically documented on the basis of fault finding experiments. Faults also simulated by the hardware as well as test of knowledge. The unitary interface is uh, this one is a unitary system, and another part of the unitary system is unitary interface with virtual instruments, right? The unitary interface is the central unit of the unitary system. It incorporates all inputs and output switches, power and signal sources,
and measurement circuitry needed to platform experiments. The interface is controlled by connected PC only. It also provides 32-bit processor with storage memory for the measurements. Okay. USB interfaces with transfer rate of 12 Mbps, WLAN Wi-Fi interface 2.4 GHz, IEEE 802.11 LAN also provided. Simultaneously, connection of any number of experiments with serial bus can be possible in this system. Designed for connection of two safety measuring leads, provides two analog differential input, 16 digital inputs and output, fixed voltages, variable three-phase supply, LabVIEW driver, etc. LabVIEW is also a very powerful tool for the training. The LabVIEW provided by the NI, National Instruments. Okay, hardware. Okay, experiments card is also called as hardware part of the unit and system, with specific circuitry and components allowing the measurements in the course to be made as well as permitting unguided experimentations. Simple setup. It has a very simple setup. We will see in the next few minutes how it is simple in the case of experiments. Experiments cards connected to the system via unit and bus. Modifiable open experiment setup on experiment cards, allowing experiments to be started quickly. Points for measurement all made available via two sockets. Systematically, fault simulation fault can be switched on and off by relay by the unit and bus only. Industry standard circuits, highly relevant to modern practice. LabSoft Manager is a comprehensive. Another part for the unit and system is learning management software called LabSoft Classroom Manager. LabSoft Classroom Manager is a comprehensive set of administrative tools, softwares for all LabSoft courses. We will discuss how much LabSoft courses available in this COE. It is also called as Center of Excellences. Central administrations of users. That means when a user comes to this lab, we will provide them a credentials for the whole training programs. When any student, trainees comes to the lab, will access this lab only through that particular provided credentials only. Collections of assignments for electronic testing using Classroom Manager. Collection of assignments, electrical engineering unit and system. It has article number SO2 20016A. Collection of assignments in digital unit and systems. The article number is SO 2016C. Collection of assignments in power engineering and renewable energies. The software. Interactive HTML multimedia courses to provide theoretical knowledge and practical skills. Theory, experimental procedures, evaluation, fault simulation, and sample solutions can be provided through the software. Animations, graphics, and images to explain theory and experiment setups. All courses may be edited using HTML editor. It has various advantage of software part. You can see virtual instruments, user-specific documentations, management of courses, users and user groups, self-designed courses may be integrated and displayed. Unit 10 electrical fundamental course. See, the student, if you cover the electrical fundamental courses, so the students are familiarized with measuring instruments, including the multimeter and the oscilloscope. It comes under the electrical fundamental courses. They are made familiar with the basic circuitry, terminology, and laws of electrical engineering by way of making their own voltage and current measurements. This knowledge can then be applied in a wide variety of compact and well-tested experiments.
All experiments are conducted using safety extra voltage that is safe to touch. Okay. In this electrical fundamental courses, we will cover electrical engineering in DC technology. The article number is 4D. Course electrical engineering 2 AC technology. The article number is 4F. Electrical engineering 3 phase technology. The article number is 4H, and so on. We have multiple courses available for the electrical fundamental courses only. Then comes to the digital electronic courses. We will have a course in digital electronics 1, gates and flip-flops. Gates and flip-flops. Courses that is digital electronics sequential circuits. We have article 6C. And then comes to the another part, power engineering courses. See, it has power engineering photovoltaic. So the certification course in renewable energies will comes under the category of power engineering photovoltaic. Apart from power engineering in photovoltaic, we will also cover some part of power engineering fuel cell technology. It is also a part of renewable energy. So we will cover, definitely we will cover photovoltaics and fuel cell technology in the course. Comes to the power electronic courses. In power electronic courses, we cover line commutated power converters 3-phase. In power converters, the inverters, choppers, etc. comes under the category of power converters. Power electronics, self-commutated power converters, then power electronics 3, frequency converted drives. It has article number 7P. Okay. Then comes to the electrical machine courses. We have in electrical machine courses DC machines, course 1, article number is 7S. Course 2, electrical machine 2, asynchronous machines. Course 3, electrical machines 3, synchronous and slip ring machines. Electrical machines courses also include electrical machine 5, stepper motors, electrical machine 6, linear motors, electrical machine 7, BLDC servo motors, single phase and 3-phase transformers. If you select, we will cover this in the category of electrical machine courses. See, control technology courses, we have a practical introduction to control technology. It covers all the part of the control system. Okay, see, such as automatic control technology, multi courses, numerous experiments and animations to provide an introduction to the subject of closed loop control technology. The course participants become familiar with the individual components and various types of control loops, including their theoretical typical operating responses. In many experiment control systems are investigated step response determined and and control loops optimized. Okay, plotter for timing diagram, step response plotter, reference and disturbance variable editor, lag elements, body plotter, etc. We have many kind of things available in the control technology courses. Right. We have also a course designed especially for the SGSU. It is called measurement technology course. It covers everything related to the measurement technology, such as RLC measurement, etc. Basic equipment sets available to this lab is called unit and interface with virtual instruments. Article number is 2A, unit and experimenter. Apart from measurement accessories, science and connections cables, we have also a multi
meter called digital multimeter. It has a unique feature that most of the multimeter is a standalone device. You can only measure through them in terms of voltage, current, and you can take the readings from the display only. But the digital multimeter provided with this lab or Lucas Newell, it connects to the system automatically. So whenever you do, whenever you have a reading from the multimeter's readings automatically comes to the system. Actually, PC connected, interface system connected through the PC. So you can also measure the quantities from the multimeter and grab this particular parameter or readings to the system only. It has a lab, classroom, manager, collection of assignments, etc. We have many things comes in this lab. These are the some extra articles provided with the lab. See, so today's agenda for the webinar is for only renewable energy. So welcome to the Unitrain courses titled Renewable Energy Photovoltaic. The Lucas Newell team wishes you lots of fun and success in working through the course topics and conducting the experiments. The next few chapters will explain how it become more familiar to you. This course is meant to impart a fundamental knowledge of photovoltaic. Key topics include the relationship between irradiance, open circuit voltages, short circuit currents, as well as the power of photovoltaic cell. How or a series of experiments are conducted to demonstrate the theoretical principles of the photovoltaic system as well as fuel cell technology. The course Renewable Energy Photovoltaic will cover the photovoltaic concept, the structure of a PV cell, open circuit voltage, short circuit current, VI characteristics related to the PV cell. It may be a single cell or it may be an array of the different cells. It also provide training to maximize or at which point you will get maximum power. It is called as maximum power point tracker. Filing factor, power of a PV cell, series connection of PV cells, parallel connections of PV cells, direct operation of the PV cells, or storage operations. If you have a knowledge of the various PV cells connections and something related to the renewable energy parts, but if you want able to storage that particular power, then it will not be useful for you. Okay, see, now these parts we have a special software like हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये ट्रेनिंग हम कैसे प्रोवाइड करेंगे इस लैब में। तो मैं अभी आपको सामने डायरेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये वाली ट्रेनिंग किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे और लैब में हमारे पास में और इसके अलावा भी क्या-क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो अब मुझे उस सॉफ्टवेयर को मेरी लैब की मशीन से ओपन करना पड़ेगा, तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको रुकूंगा एंड देन वी विल connect we will definitely connect through the lab only. See how will this training will be organized in 3 months training duration. देखिएगा, ये डायरेक्ट में भी आपको जो स्क्रीन आपके सामने ओपन है, ये स्क्रीन डायरेक्ट हम सॉफ्टवेयर से ही आपको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर करे अभी थोड़ी देर पहले, और
अभी हम देखिएगा यूनिट 10 कोर्स रिन्यूएबल एनर्जी फोटोवोल्टाइक को हम शुरुआत कर रहे हैं। सो ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर करे हैं अभी पिछली स्लाइड्स में। इसमें जो इक्विपमेंट यूज होंगे वो इक्विपमेंट होंगे, सबसे पहले आर्टिकल नंबर CO 42032A, it is called unit and interface, and C CO42034K, it is called photovoltaic board. CO42032J, it called unit and measurement accessories. It includes shunts, connections, cables, and building plugs, etc. Sorry, bridging plate, etc. The board, how the board looks like. So this is the board or training equipment which will enable you to do the training. It has it has connections of solar modules for measuring and interconnection through this part. It has another part, lead accumulator and charging unit with deep depletion protections. It has also a 15-volt direct voltage for charging the accumulator. It covers blower and LED lamps as load. You will generate the energy from this particular PV cells and will uh, distribute the energy through this particular section. This board has also a potentiometer as variable load. You can vary the load as per your requirements only. So the technical data to related to this training system is it has 120-watt radiator, dimmable. It can be controlled uh, through the knob available with this lamp only. This lamp is known as 120-watt radiator. It has also a 4 6-volt monocrystalline solar modules. It has 12-volt lead accumulator, 12-volt charging unit with depletion protection and over voltage protection, 12-volt blower, 12-volt LED lamps, and it has dimensions of 420 into 270 millimeter. See how it is a futuristic for the renewable energy sector. See, project, if you consider this course, then it explain uh, how it will be helpful for you. See, for example, we have a modernizing a home. So you can connect various solar panels to the rooftop of the home, and then how it will connect it to the inverter available indoor in the home. So this lab explains you how can you demonstrate a project in this particular home. See, for example, we will comes to the introduction to photovoltaics, how photovoltaics will uh, run. See, what is solar cell, right? So see, for example, a solar cell operates on the principle of photovoltaic effect, more precisely the inner photoelectric effect, whereby the exposure to light causes charge separation. This effect was first observed in 1839 by Alexander. In 1958, the first satellite to obtain its entire electrical energy from solar cells was launched into orbit around the Earth. Earth. Photovoltaic technology has now established itself as a variable source of power ranging from a rating of few milliwatts to several kilowatts. So it also explain step by step how the training will cover the topics. See, if you don't have any idea of solar cell, then they will provide a structure of solar cell in theoretical part only. So see the structure of PV cell. So they explain the whole PV cell in different layers. First layer is known as anti-reflective layer. Another layer
available below the anti-reflective layer is called semiconductor N semiconductor layer, another layer P semiconductor layer, and then last layer is known as rear side metal contacts. Okay, so this explain a theoretical concept also. Then see, after the solar cell, structure of solar cell, we will explain principles of the solar cell, right? See, they explain solar cell in theoretical part in the above paragraphs, and then these paragraphs explain by the simulations of different kinds of silicons available to the solar cell. See, if we play, then how it the silicon structure will behave, and see this, when a solar rays comes to the bond of the silicon, then one bond breaks to the covalent bond, and one electrons will be moving will be available to moving throughout the structure. And another type of structure available in this silicon, intrinsic silicon, is called extrinsic semiconductor, uh, extrinsic semiconductor, and the extrinsic semiconductor will be N type and P type. And what happens when N type semiconductors will work, and what happens when P type semiconductor will be created? Okay, then how it comes to the PN junction. One is N type semiconductor and another one is P type semiconductor, and how the PN junction will work. See, if we push the play button, then it explain you how the PN junction will behave. See this again, when P and N junction comes together, the minority charge carrier from the N, N type will comes to the P type semiconductor and leaving positive charge at the junction. And when the P type structure gains the electrons comes from the N type semiconductor, will leave the negative ion on the layer, right? So how photovoltaic effect will come, then it is also explain you by using these things. Uh, After that, we will explain what types of PV cells will available for you to impart you in the renewable energy sector. From after that, we will cover manufacturing technologies, what kinds of technology available to manufacture a PV cell. Then comes to the solar irradiance, how solar irradiance will come to the U, solar irradiance on Earth, and then see the graphs. At x-axis it has wavelength in nanometer, and irradiance at y-axis, and it has in Weber per meter square in nanometer only. Then we will explain you after the theoretical part completed by you, how it comes to the real world practical system, and how the theoretical part you cover in the previous some slides or previous some sections, but now the it comes to the practical part. See the board as usual, then push a play button on this, then they explain two jumper to be connected at this point. It explain in step 1. Then for step 2, play button again, and they said you could another jumper to be connected between these two sections in the practically available kit. This is the explanation how can you do the practical in this kit. So it explain you
multimedia through multimedia connections only. See, push button again, then the connection for this particular point connect from this point to this point. Another then another jumper to be connected with this point, and then another junction to be connected at this point. Then again play. Then it tell you how the load can be connected to the photovoltaic cells. Okay. Then the whole connections will be completed in this particular system. Now they will shoot you some questions related to these connections. See, set various irradiance using the dimmer and observe the LED response. They provide you a step they call set various irradiances using the dimmer and observe the LED responses. To achieve the desired results in the experiments here, you must correctly align the radiator. The radiator we will discuss in the previous steps. So the irradiators must be aligned correctly to do a maximum to get the maximum power through the solar cell only. Then this is a ammeter. It is connected. See, we have discussed the multimeter. So the multimeter connected to the uh, practical training system. The practical training system or multimeter connected to the virtual instruments. So this is called a virtual instruments. So this instruments virtually connected to the kit only. So you don't need any extra equipments to do your experiments in this lab. Then we have another multimeter called channel B, and then they ask you some questions related to this thing. So this lab will provide you first theoretical knowledge of the system or theoretical knowledge of related to the PV cells, and then explain you the simulation related to the PV cells or something else related to the null energy, and then you will do experiments through the kit available in this, like we discussed this. Apart from the available resources in this lab, we have also a 20 kilowatt in-house uh, power. Sorry, it is called uh, power plant, 20 kilowatt solar based power plant. And we have also a training simulator of 5 kilowatt. These all things are practically available in this campus only. So the whole so whole training will be considered in three part. First one is four part. First one, it has theoretical theories which will be covered by the Lucas Mule systems only. And then after completion of theory, you can see the simulations and modeling of the concepts explained through the theory. Then we have we will cover this theoretical and simulations model through the practical training kit called 2A. After the practically completion of all the concepts and practical knowledge, then we will move to this solar simulator, which is for 4 kilowatt, 4 or 5 kilowatt real world practically available simulator. So you can do different kinds of practicals on the simulator also. And after the simulates, doing your practice on the simulator, you can move to the real world power plant, which is available in the campus, and it is also a 20 kilowatt power plant. So you will have each and everything through the training program, right from the theoretical concept to the real world existence of the solar energy or solar power plants. Uh, so uh, we have covered various topics
related to the training programs we'll cover in the trainings. And I think it's sufficient up to this point. Over to the madam, Arunya madam. Okay, sir, like we can start with a Q&A session. Sure. So anyone who has any questions, there are a lot of questions are there Q&A box में काफी लोगों ने questions पूछे हुए हैं, Okay. तो हम वो आंसर कर सकते हैं उनको. एंड किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन रेज हैंड्स, तो वील अनम्यूट यू वन बाय वन एंड आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं सर से जो भी आपको डाउट्स हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो. सर पहले Q&A बॉक्स के हम क्वेश्चंस हाँ कंप्लीट कर हाँ लेते हैं कर एक बार. लेते हैं. विपिन कुमार नंदा, you have asked how it would be practical practice, kindly give link. Okay, see, we have 5 part for this system. देखिए पहले हम क्या theoretical concept समझेंगे. theoretical concept भी आपको लुकास न्यूल के लैब सॉफ्टवेयर पे ही होगा. देन उसका हमने सिमुलेशन समझेंगे कि सिमुलेशन किस तरीके से वो जो थ्योरी आपने समझी है उस थ्योरी को किस तरीके से हमने कवर करना है. एंड देन जब हम थ्योरी भी समझ लेंगे और उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे तो फिर एक हमारे पास में एक किट अवेलेबल होगी. उस किट पर वो थ्योरेटिकल और जो सिमुलेशन आपने अभी तक समझा है उस सिमुलेशन को आप उस किट पर एक्सपेरिमेंट कर करके देख सकते हैं या देखते हैं. फिर जब आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि पीवी सेल किस तरीके से वर्क करता है, उस पीवी सेल में हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो कैसा होगा, सीरीज कनेक्शन करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, अगर हम इरेडियंस में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इरेडियंस के एंगल्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा, और अगर हम किसी के कनेक्शंस को पैरेलल में कर दें, किसी को हम सीरीज में कर दें, और फिर उसके बाद में हमारे सिस्टम्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें हम समझेंगे किसमें, हमारी इस पर्टिकुलर लैब सॉफ्ट और यूनिट एंड सिस्टम के माध्यम से. जब हम सारी चीजें यहाँ पे समझ लेंगे तो हमारे पास में एक रियल वर्ल्ड का सिमुलेटर होता है. सिमुलेटर आप समझते होंगे कि डिफरेंट सिमुलेटर के पास में जो रियल वर्ल्ड का सिमुलेटर होता है उसमें 6 अलग अलग तरीके की प्लेट्स हमारे पास में अवेलेबल है, सोलर प्लेट्स. पहले सोलर सेल्स होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल्स जो होता है वो क्या होता है हमारा, अ, एक पूरा सोलर प्लेट होती है. तो हमारे पास में 6 सोलर प्लेट्स उसकी अवेलेबल हैं. प्रैक्टिकली इन्वर्टर अवेलेबल है जो कि कनेक्टेड होता है किससे, आपके सोलर सेल से. तो जो चीजें आपने अभी तक में लैब में सीखी हैं वो सारी चीजें आप अब सिमुलेटर पे भी कर सकते हैं, राइट. जब आपको सिमुलेटर पे भी रियल वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस समझ में आ जाएगा कि ये इस तरीके से होगा, तो हम फिर उसको, हमारे पास में 20 किलोवाट का पावर प्लांट भी अवेलेबल है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में. तो वो सारा प्रैक्टिकल हम उस सोलर प्लांट में जाकर के भी करेंगे, राइट. बिपिन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ये अनदर क्वेश्चन अनोनिमस अटेंडीज हैं. सर, विल यू प्लीज शेयर द recorded of this session due to network issue? I was not able to join early. Okay. So please contact Miss Arunima ma'am for the same. Bipin Sir, Kumar ने we'll be anyway uploading all of these recordings on our YouTube channel and also our online partners, so you can check that from there. ओके. विपिन कुमार नंदा ने एक क्वेश्चन और पूछा है कि हम मल्टीमीटर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी पीसी से, राइट. मैं यही समझ पा रहा हूँ. तो देखिए विपिन, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में यूनिट एंड सिस्टम है इसमें 3 पार्ट होते हैं. एक यूनिट एंड इंटरफेस होता है जो कि हमने थोड़ा सा डिटेल में हमने डिस्कस भी किया था. फिर दूसरा पार्ट आता है एक्सपेरिमेंटर. एक्सपेरिमेंटर्स में हम अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कार्ड्स को यूज करते हैं. उस एक्सपेरिमेंट कार्ड्स की जगह पर इनके द्वारा जो स्पेशल मल्टीमीटर डिजाइन किया गया है कॉल्ड 13S मल्टीमीटर को हम IR रेज के माध्यम से उस एक्सपेरिमेंट कार्ड्स पे हम मतलब उसको प्रैक्टिकली उससे कनेक्ट कर सकते हैं. सो अब जो भी हमारी जो हमने एक्सपेरिमेंटल कार्ड्स में मल्टीमीटर को यूज कर रहे हैं
तो अब जो भी मल्टीमीटर की रीडिंग्स होंगी वो IR रेज के माध्यम से इंटरफेस यूनिट तक पहुंचेंगी और इंटरफेस यूनिट से डायरेक्ट हम PC पर लैब सॉफ्टवेयर के माध्यम से वर्चुअली हम उस रीडिंग्स को देख सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो मल्टीमीटर आपको दिख रहा है, तो जो भी रीडिंग उस मल्टीमीटर पे आएगी 13S मल्टीमीटर पर आएगी तो वो IR रेज के माध्यम से हमारे एक्सपेरिमेंटल कार्ड पर देगी और एक्सपेरिमेंटल कार्ड्स इंटरफेस यूनिट के थ्रू हमारे इस वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स पे उसकी रीडिंग्स हमको दिखना चालू हो जाएंगी या दिखती हैं, राइट। Vipin has also question how we get practical kit. The practical kits are available in the lab only at this particular place. So come and then use all the kits available in this system lab. Sambhav Jain have question, sir, about earning as a freelancer. So I think they have some another kind of question. ये पूछ रहे हैं, हिमांशु पूछ रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज में नहीं होगा क्या? हिंदी लैंग्वेज में भी बिल्कुल होगा। जो आपका लैपटॉप सॉफ्टवेयर है ये हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, फ्रेंच में भी है, इंग्लिश में भी है, जर्मन में भी है और हम इसको हिंदी में भी कर सकते हैं या करते हैं, तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। संभव जैन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में पूछ रहे हैं। तो संभव इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इस समय खास करके रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारी। तो आप अगर कभी आपने देखा होगा दिस इज कॉल्ड डिस्कॉम्स। सो एमपी में जो डिस्कॉम से रिलेटेड जितने भी सप्लायर्स हैं या जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सबके साथ में हम लोग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं आप लोगों के लिए। और क्योंकि सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही हैपनिंग एरिया है इस समय, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये कह रहे हैं कैन अ 12th पास स्टूडेंट गो फॉर दोज कोर्सेज? यस, इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द 12th पास स्टूडेंट ओनली and you can also some students from the background as diploma engineer or B.Tech engineer can also join this particular course. Term of course it is only for 3 months. Here, how many voltage in silicon diode in germanium diode for pass through the current? It is a typical question. Okay, it is a technically typical. You not mentioned which kind of voltage you are asking about, but मैं जहाँ तक समझता हूँ आप कट इन वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो सिलिकॉन डायोड में 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम डायोड में इट इज 0.3 वोल्ट, राइट। और इसकी अगर हम बात करते हैं एनर्जी गैप की, तो सिलिकॉन में इट इज 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम में इट इज 0.785 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली। They have a question, explain how to claim certificate after this. This certificate मैं आपको बता दूं कि जो सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं ये टोटली सॉफ्टवेयर से चलने वाली ट्रेनिंग है। जैसे ही आप कोई भी एक पार्ट को कंप्लीट करते हैं फिर उसका एक आपके पास में एक्सरसाइज आती है या कहते हैं टेस्ट आता है, आप उस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट आपका स्टेप आता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करते हैं, फिर उसका टेस्ट आता है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है। तो ऐसे करके ये पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग होती है तकरीबन 5 से 7 एक्सरसाइजेज में कवर होती है। और ये जो सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंट्स पे करेंगे वो सारा एक्सपेरिमेंट ऑटोमेटिकली हमारे सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल रहता है। तो आप जैसे ही उस पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लेते हैं प्लस जो अलॉटेड आवर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 3 महीने के आवर्स की बात करें तो ये अराउंड 360 के अराउंड आवर्सेज होते हैं। अगर आप ट्रेनिंग आवर्स कंप्लीट करते हैं और साथ में आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में सर्टिफाइड हो जाते हैं। और ये सर्टिफिकेशन आपको लुकास न्यूल भी प्रोवाइड करता है और SGSU के माध्यम से भी प्रोवाइड होता है। अवेलेबल addresses for the SGSU University. Now ma'am, over to you please. सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जो नंबर्स अवेलेबल हैं SGSU की वेबसाइट की लिंक भी यहाँ पर है, एंड देन वी हैव आवर एड्रेस, सो इफ़ यू गाइज वांट यू कैन कम एंड विजिट आवर कैंपस। आप एक बार आके देख सकते हैं, आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं सारे फैकल्टीज एंड
SMEs से and you can ask your doubts. Also यहाँ पे सर हिमांशु ने हाथ उठाया हुआ है तो हाँ सर, आपका कैंपस का मतलब वहाँ पे क्या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई फैसिलिटीज है, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है? एरोनॉटिकल तो नहीं है, पर अगले 1 महीने में हम लोग ड्रोन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स मतलब लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि कोई एक बोल सकते हैं आप? जैसे कि एग्रीकल्चर ड्रोन ऑपरेटर, है ना, समझ गया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि वो अभी लॉन्चिंग पीरियड में है, तो मैं अभी नाम तो आपको मतलब ओके प्रिसाइज ओके नहीं बता सर, सकता। ओके ओके, अंडरस्टूड। हाँ, सो उससे सर, रिलेटेड कुछ टेक्नीशियन से रिलेटेड भी कोर्सेज आएंगे उसमें। हाँ मतलब हाँ, जैसे ड्रोन टेक्नीशियन शायद कोई होता है, अंडरस्टूड। और फोटो एंड वीडियो शूटर्स के लिए भी कुछ एक कोर्स जो उसमें होता सॉफ्टवेयर है। आप बताए हैं वो मतलब मैंने जितना तक समझा है, मैं जितना तक समझ पाया हूँ, मेरे को लग रहा है कि वो सब मैटलैब इस टाइप ऑफ सिमुलेशन मतलब काइंड ऑफ ना ना इलेक्ट्रिक ना टाइप ना ऑफ थिंग है ना? नहीं। सब में तो मैटलैब मल्टीमीटर देखिए, ये सब क्या दिख रहा है। क्या डिफरेंस है इसमें, कि मैटलैब एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, ये सही बात है, ठीक And है। I'm not saying they both are the same. I'm saying it is like the same kind, like the same काइंड size ऑफ, of thing. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बस इसमें क्या हाँ, डिफरेंस है, क्योंकि मैटलैब so से आप कोई रियल प्रैक्टिकल किट्स को आप उससे समझ इंक्लूड नहीं हाँ, कर पाते। वो तो समझ गया सर, लेकिन मैं हाँ। बोल रहा हूँ कोई CFD या फिर FEA या फिर CAD कैम इस टाइप ऑफ CNC प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ सिखाते हैं आप? नहीं, ये सीएनसी प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें एक वो अलग फील्ड हो जाती है, मैकेनिकल अलग और है। उस सब के लिए हो जाएगी, है ना। ओके ओके। लेकिन इसमें अब अगर मान के चलिए कि आपके पास में, जैसे आपने पहले ओम्स लॉ पढ़ा होगा, हाँ, ओम्स लॉ, V is equals ठीक है, to हाँ, I by कि R at constant temperature. हाँ हाँ, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड, R है ना। रेजिस्टेंस। तो क्या होता है कि ये चीज आपने अभी तक पढ़ी है, ठीक है, हाँ लेकिन इसका कभी आपने सिमुलेशन नहीं देखा होगा, मैं एक हाँ, बात बताऊं, ओके। है ना। तो क्या होगा कि पहले आपको थ्योरी वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर हाँ, उसका सिमुलेशन आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा, अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज होगा, और वो सारी चीजें आपको सिमुलेशन में बताएंगे। ओके। अब फिर जो सिमुलेशन आप देख चुके हैं, उसका हाँ प्रैक्टिकल आप लैबों में जाते होंगे पहले, राइट। हाँ, तो जैसे किट होती थी, उसमें वोल्ट मीटर हम कहीं लगाएंगे, या मीटर कहीं लगाएंगे, और दूसरी सारी चीजें लगाएंगे, और उसकी हम बिल्कुल रीडिंग्स सही, लेंगे। बिल्कुल सही। ऐसा होता होगा। हाँ अब हाँ, क्या होता है कि वो जो किट है, उस किट को हम लोगों ने यूनिट एंड इंटरफेस के माध्यम से पीसी से कनेक्ट किया हुआ हम समझ गए, आप पूरा डिजिटलाइज कर दिया, पूरा लैब है, पूरा टेक्नोलॉजी को आप डिजिटलाइज, पूरा, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया मतलब। हाँ, लैब ईच की एंड जो एवरीथिंग विल बी टेक्नोलॉजी है, डिजिटाइज इन आई दिस एम लैब। वेरी प्राउड कि लैब की जो भी मतलब जिनके पास लैब की फैसिलिटी नहीं है, अगर वो एक ओपन सोर्स, अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं इसको, तो इस सॉफ्टवेयर से वो सब चीज समझ सकते हैं। आई एम हैप्पी फॉर इट। बिल्कुल। सो हाँ, मेरा इंटरेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी में इसीलिए बना क्योंकि हाँ, मैंने द फर्स्ट वर्ल्ड्स एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बुक जिसका नाम है बृहद विमान शास्त्र, उसका ओके, चलते पढ़ा था, जिसमें एंशियंट इंडियन टेक्नोलॉजी मेर्क्यूरी वगैरह सब चीज रिन्यूएबल यूज करके वो लोग एरोप्लेन को उड़ाए थे। हाँ हाँ, So because of that, I thought I could somehow relate, but I don't think that's the case because आप जिस फील्ड से रिलेट करते हो उसमें मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है। हो सकता है, नहीं सर, हुआ है। जी थैंक यू, जी जी, बट आई फील वेरी ऑनर्ड टू अटेंड द प्रेजेंटेशन, इट वाज वेरी गुड। और जो थैंक यू। आपने लैब टेक्नोलॉजी में जो किया है, मतलब मैं जिस कॉलेज में हूँ मेरे पास तो लैब फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है, मैं अगर ओके फ्रैंकली बोलूँ तो ओके आई ओके, वुड बी ग्लैड टू विजिट इफ इट्स ओके फॉर यू। यस डेफिनेटली, यू आर वेलकम एनी टाइम। और बात यह है कि मेरे कॉलेज में ना ही फ्लूइड मैकेनिक्स के लैब में mercury है, ना ही हम्म, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में वायर है, कुछ भी नहीं है। ये ज्यादातर एआईसीटी रिलेटेड कॉलेजेस की समस्या है, हाँ, ये हम सब लोग टायर एक्सेप्ट टू टायर थ्री एक्सेप्ट सिटीज एक्सेप्ट में जो करते भी हैं। कॉलेजेस है सर, मेरा मेरा कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में ऐसा बहुत कॉलेज है ज्यादातर टायर टू ज्यादातर टायर थ्री सिटीज कॉलेजेस, में, जिनमें ना ही हाँ, कोई लैब है, और बच्चों को मतलब एक तरफ का ब्लैकमेल करके रख देते हैं कि हाँ ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल बस। बिल्कुल। अच्छा देखिए, इसी के कारण से तो स्किल का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है, सो द वे क्योंकि यू हैव मेड अ सॉल्यूशन फॉर दिस, आई एम रियली प्राउड एंड रियली हैप्पी सर कि आपने एक ऐसा ओपन मतलब जो भी सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया है, आई एम रियली हैप्पी। धन्यवाद यस, सर, ये मेरे को थैंक बात यू, करने का मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।